Namaskar. Today we discuss the comprehension question answers of the subject named Run Run Run. Question number 1. Who is the speaker in the poem? The poem is the speaker in this poem. Question number 2. How many times does the poet repeat the word run? The poet repeats the word run 12 times. Question number 3. Is the poet happy? Why? Why not? Yes, the poet is happy to see a restless child who tries to keep himself full of activities. Question number 4. Find in the second stanza the word that means under. The word with in the second stanza. Question number 5. When should one run? Why do you run? One needs to run when one gets to be out of laziness. We need to run to free our body and minds. Question number 6. There are some words about nature described in the poem. One is the sun. What are the other words? The words related to nature are raindrops, trees, breeze, hillside, meadows. Question number 7. Does the poet like to run in the raindrops? Why? Why not? Answer. Yes, the poet always likes to run in the raindrops because it gives him nice feeling and merriments. Answer. Question number 8. Why does the poet starts and end the poem with the word away? He wants to free the body and mind from routine life. Question number 9. What does the poet want the readers to do? The poet wants the readers to free themselves from routine life to real life and merry life. Question number 10. Do you like running through the meadow? Why? Why not? Yes, I like running through the meadows because I enjoy the beautiful sight of the meadows and love running on the soft grass. Second activities. Choose the right answer from the options. Question number 1. The poet wants to run dash. Option. Into the city, away from the sun, in the raindrops, down the riverside. Answer hobo in the raindrops. Question number 2. The poet is dash. Happy, unhappy, angry, worried. Answer hobo happy. Question number 3. The word run has been used dash times in the poem. Option 5, 8, 12, 10. Answer hobo 12. Which word is similar in meaning to green field? Option lane, meadow, breeze, merry. Answer hobo lane. Number 5. Vocabulary. Match the following verses under A with verses under B. One is done for you. Run up the lane. Run in the raindrops. Run through the meadows. Run with the trees. Run down the hillside. Number B. Given below a list of words on the left
Write their meanings choosing from brackets. Against is what? Bracket रे थिबा वर्ड गुड़िक एथिकी मैच करी एग्निस्ट क्वेश्चन वर्ड गुड़ाक लिखा। मेरी मेरी कौन हम ना मेरी हम चिरफुल। ब्रिज ब्रिज हम कूल एयर। लेन लेन कौन हम ना लेन हम रोड। मिडो मिडो रहिबो ग्रीन फील्ड। Number C. Given below are some words, pair them together according to the way they are pronounced. Away away कौन हम ना away रो डे। sun run। trees trees breeze। again again रो lane। Question number D. Mark the underlined word in the following sentence. Example, run down the hillside. The word hillside is hill plus side. देखुथिबा hill plus side hillside. Now you add side with the words river, country, sea, road, lake and ride. The new words one is done for you. Out example, river plus side equal river side. ए समस्त वर्ड रे साइड ऐड करिबा। जेमिति कंट्री प्लस साइड कंट्री साइड, सी प्लस साइड सी साइड, रोड प्लस साइड रोड साइड, लेक प्लस साइड लेक साइड। ए भली क्वेश्चन नंबर ई. Order the jumbled letters and make words. One is done for you. Words एपट सेपट कर लिखाई आम तार मीनिंग वर्डटा लिखा। जमी YAD तार मीनिंगटा हम डे। से भली हम कंट्री, रन, सन, सिटी, ट्री ट्री पर ये हम लेन, मिडो। 6 ए चेंज दी फॉलोइंग लाइन्स लाइक दी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आम देइछि ताहाको आमे देखि तलर क्वेश्चन गुड़ाक सॉल्व करिया। आई रन इनटू द सन। एग्जाम्पल आई रन हबनी एठी आई एम रनिंग इनटू द सन। सेमिति एग्जाम्पल देइछि। एबे एटा निजे आमे करिबा। आई गो टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड। एठी कोन हबो आई गोइंग टू माई स्कूल विथ माई। क्वेश्चन नंबर ई. Order the jumbled letters and make words. One is done for you. Words एपट सेपट कर लिखाई आम तार मीनिंग वर्डटा लिखा। जमी YAD तार मीनिंगटा हम डे। से भली हम कंट्री, रन, सन, सिटी, ट्री ट्री पर ये हम लेन, मिडो। 6 ए चेंज दी फॉलोइंग लाइन्स लाइक दी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आम देइछि ताहाको आमे देखि तलर क्वेश्चन गुड़ाक सॉल्व करिया। आई रन इनटू द सन। एग्जाम्पल आई रन हबनी एठी आई एम रनिंग इनटू द सन। सेमिति एग्जाम्पल
देइछि एबे इटा निजे आमे करिबा आई गो टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड एठी कोन होबो आई गोइंग टू माई स्कूल विथ माई 6 a chain the following lines like the example रे से देइछि क्वेश्चन ताकू देखि आमे एगुडी को सॉल्व करिवा आई रन इनटू द सन एग्जांपल आई एम रनिंग इनटू द सन सेमदी आई गो टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड्स वी प्ले इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड वी पाखे आर लगे वी आर प्लेइंग इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड आई कम बैक माई होम आई एम कमिंग बैक माई home. I wash my hands and legs. I am washing my hands and legs. I pray to God with my parents. I am praying to God with my parents. B. Read the poem and write the words which go with run. One is done for you. आम चित्रटा देखुचे मझे रन लिखाई रन रमी गोटे वर्ड से एग्जांपल देछि आवे सेमती मु लिखिदी रन डाउन रन अप रन इन रन बैक रन विन रन इन रन इनटू 7 जस्ट एग्जांपल गोटे देछि Change the underlined words of the stanza using your own words and get your new poem. ये जो पोएम रो देछि अंडरलाइन कराई एथिरे आमे नुआ लाइन मध्य देई गठन करि परिबा जेमति रन डाउन दी हिल साइड जगह आमे रिवर साइड नहीं परिबा रन अप दी लेन जगह प्लेन रन थ्रो दी मिडो जगह आमे फील्ड्स नहीं परिबा एभली अधिक शिक्षणीय वीडियो देखिया पई आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु।